हाँ जी, शीट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2. Show that the function f(x) is defined as follows: is continuous at x is equal to 2. In this question's continuity, I will not discuss that, you will do of your own. But I will discuss the differentiability. In solutions, continuity have to be done yourself. And for differentiability, right-handed derivative limit x approaches to 2 plus fx minus f of 2 divided by x minus 2 f of x greater than 2 is 5x minus 4 and f of 2 from here is, here you can calculate f of 2, 2 into 2 square minus 2, 8 minus 2 is 6. The right-handed derivative is 5. Go with the left-handed derivative. Limit x approaches to 2 minus f of x minus f of 2 upon x minus 2. In case of 2 minus less than 2, this is that fx, that is 2x square minus x. This will be 6 as it is upon x minus 2. If you go with the factorizations, 12, so x minus 2 into 2x plus 3 is the factor. बिकॉज अब साइड्स में इनकी फैक्टराइजेशंस कर लेना कि 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6, 2x कॉमन x माइनस 2 प्लस 3 कॉमन x माइनस 2, तो x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3, तो दिस इज 5 बिकॉज x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसल्ड. So this implies left-handed derivative is equal to right-handed derivative. This is not 5, this is 7. Left-handed derivative is not equal to right-handed derivative. This implies fx is not differentiable at x is equal to 2. Same question number 3. fx is equal to, this is not derivable, but although it is continuous, continuity we have proved so many times. Again, if it comes in exams, continuity have to be proved yourself. And for differentiability, again, limit x approaching to 0 plus, I am taking right-handed derivative, f of x minus f of 0 upon x minus 0. साइड में आप f of x इज इक्वल टू मॉड x को अपनी लैंग्वेज में सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं. इट इज x इफ x ग्रेटर देन 0, माइनस x इफ x लेस देन 0 and 0 if x is equal to 0. So now in case of 0 plus,
You will take x minus 0 upon x minus 0. Answer is 1. Actual derivative of this actual become the signum functions. Left-handed derivative 0 minus f of x minus f of 0 upon x minus 0. Limit x approaching to 0 minus x minus 0 upon x minus 0. Answer is minus 1. This implies left-handed derivative is not equal to. This implies fx is not differentiable at x is equal to 0. Question number 4 you will try of your own. Only mod of x minus 2 है, शीट से चेक कर लेना. ये mod x है, वो mod of x minus 2 है. So I have not taken question number 4. That is your homework. And question number 5, to show that the function this, again f of x पहले आप ब्रेक करिए. Mod of x minus 1 plus mod of x plus 1. If you go with the number line, this is minus 1 and this is 1. If you take x less than minus 1, minus 2 ले लेते हैं, both are negative. If x lies between minus 1 and 1, this is negative, but this is positive. If you take x greater than 1, both are positive. So let me simplify. Minus 2x plus 1 minus 1 cancelled. Only 2. Only 2x. If x less than minus 1, if x lies between 1 and minus 1, इक्वालिटी साइन आप कहीं भी डाल दीजिए. एक माइनस 1 के ऊपर इक्वालिटी डाल दीजिए और एक 1 के ऊपर. अगर जो स्टूडेंट्स ये ब्रेकिंग पॉइंट को समझ लेते हैं तो इंटीग्रेशंस तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं है. बिकॉज फर्स्ट स्टेप्स वी ऑलवेज गिव यू कि हाउ टू simplify the mode. Now differentiability at 2 points you have to discuss. In solutions, फर्स्ट स्टेप सोल्यूशन तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है. एफ ऑफ माइनस 1 देख लीजिए, वो भी 2 है और एफ ऑफ 1 भी 2 है. 1 यहाँ पुट करेंगे, माइनस 1 यहाँ पुट करेंगे. इसकी आपको जरूरत पड़ेगी. पहले आप एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे डिस्कस कर लो. तो 1 प्लस में देखो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स. लेफ्ट हैंड साइड पर आप एफ डैश 1 भी दे सकते हैं. माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1. व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? वन प्लस this one 2x. f of 1 is 2 upon x minus 1. 2 common answer will be 2. And f dash 1 minus limit x approaches to 1 minus f of x minus f of 1 upon x minus 1. अच्छा बताओ 1 माइनस में क्या लेंगे, दिस 1 2 और माइनस दिस अपॉन एक्स माइनस 1 और लिमिट है x अप्रोचेज टू 1. इन दिस केस आंसर विल बी, तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज नॉट इक्वल टू, तो ये तो मैंने 1 पे डिस्कस किया. सिमिलरली you will discuss at
x is equal to -1 yourself, and you will find that the left-handed derivative will not be equal to right-handed derivative. So this is the question number 5, and sheet we have taken is